Well, while the Sahitya Academy has now called for an emergency meeting of its executive body today to discuss the issue of writers returning their awards over what they say is rising intolerance in the country, a few have even resigned from the literary body over the issue. Now, those protesting writers will be marching from Mandi House to the Sahitya Academy office in protest today. Pooja Shali is reporting from outside. Pooja, now one of the key demands of all the other authors who are also threatening to return their awards is that the Academy, after its meeting today, come out with a stern and a strong resolution. What are you picking up on that? Well, we seem to have an audio problem over there with Pooja Shali. We'll try and go back to her in just a bit. But just to tell our viewers, today we have an emergency meeting of the executive body of the Sahitya Academy. It's being held in Delhi. This, of course, is about several writers returning their awards over what they call is growing religious intolerance in the country. There are several other authors who have also threatened that they could perhaps be taking the same course of action unless the Sahitya Academy and its executive council today comes out and makes a statement over this issue. At the moment, we are also given to understand that those protesting writers could be marching up to Mandi House in protest. Of course, this meeting of the executive body is being looked at very, very keenly because it's likely to discuss the crisis caused by the protest. लिख तो रहे ही हैं, हम क्या कर सकते हैं इस ऐसे माहौल के विरोध में जहां किसी को हमारी जान कब हम जिंदा हैं नहीं है। अघोषित इमरजेंसी क्या अघोषित जीवन के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिंदा रहने पर प्रतिबंध अब लग गया है। तो ऐसे उसमें हम जाएंगे नहीं, साहित्य अकेडमी पे नहीं। अगर साहित्य अकेडमी नहीं स्वायत्त संस्था और वो लेखकों के की अभिव्यक्ति की आजादी के लिए कोई बयान दे सकती या कुछ काम कर सकती है तो फिर किसके पास जाएंगे? अवस्थी नीला ये बहुत आज प्रोटेस्ट पर आप लोग तो क्या प्रोटेस्ट किस तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे आप? शांतिपूर्ण मौन जुलूस लेके जाएंगे कि आप अपना मौन तोड़ दें, हम तो यही कह सकते हैं। उनसे हम कह के हार गए हैं तो अब हमने सोचा है कि एक खामोश तरीका अख्तियार किया जाए। आप देख रहे हैं हम तो निहत्थे हैं, उनको देखिए, उनके हाथ में बंदूकें हैं, उनके हाथ में डंडे हैं, हम मौन जुलूस निकाल रहे हैं। तो देखिए ये हमारा एक प्रोटेस्ट करने का तरीका है। साहब जिस तरीके का बयान आ रहा है कि हो हल्ला मच रहा है, तमाम चीजें, वो तो आप कवर कर ही रहे हैं, आप इसको देख लीजिए कि हो हल्ला मचा कि नहीं मचा। जो अवार्ड वापस कर रहे हैं उन पर साहित्य अकादमी कह रही है कि हो हल्ले से ज्यादा कुछ। तो क्यों अवार्ड वापस कर रहे हैं? उनको इतनी चिंता क्यों हो रही है? करने दे दीजिए अवार्ड वापस। और भी लोग खड़े हैं लाइन में, बहुत सारे लोग, अनीता देसाई, विक्रम सेठ, बहुत सारे लोग हैं। वो कह रहे हैं कि भाई अगर आप अपना रवैया नहीं बदलते हैं, आप अगर संवेदनशीलता नहीं दिखाते हैं तो हम लौटा देंगे अवार्ड। ऐसे सम्मान का क्या फायदा जो अपमान साबित हो। There are writers specifically from the Sahitya Academy and artists in general who have come today protesting at Mandi House, and the location of Sahitya Academy is barely 500 meters to a kilometer away, and they are going to march. Now there has been an emergency meeting that has been called by the Academy at their location, and that is why these artists are heading towards, and many of them, as you will see, are wearing black bands, some of them on the wrist, some of them on their mouth, and they basically are stating that it is the freedom of expression that they say is in danger. So it is while specific to the Academy about not releasing a strong statement after Kalburgi's murder, but they also say a lot of other incidents have taken place. In fact, as you can see, there is a poster here which is very specific to Kalburgi, who was very brutally murdered, and that is why these writers and artists feel that at this juncture it is important that sir आप हमें बताइए, आज काफी आर्टिस्ट आए हैं, कुछ ने ब्लैक बैंड पहना है, कुछ ने फेस पे, तो क्या एग्जैक्टली आप अकेडमी से आज सवाल रहेगा आपका? सर देखिए, ये एक एकेडमी तो प्रतीकात्मक है पूरा इसका विरोध, लेकिन ये इशू बहुत बड़ा है और ये सिर्फ आर्टिस्ट और राइटर्स का नहीं, जितने भी कल्चरल संस्कृति कर्मी हैं, जितने कल्चरल एक्टिविस्ट हैं, जितने, ये सारे एक बड़ा व्यापक सवाल उठा रहे हैं। और कलबुर्गी का ही नहीं, इसके पहले पंसारे का, दाभोलकर का। हमारा कहना यह है कि जब से एक ये सांप्रदायिक और फासिस्ट सत्ता में आए हैं, चाहे राज्यों में और अब तो केंद्र में,
तो ये हर तरह की सच्चाई की आवाज को ये दबा रहे So हैं। there's going to be a memorandum that will also be given to the Academy, and what they're basically going to say is that there is this freedom of expression they feel that does not have enough support now, and that is why these writers, about 50 to 80 in number, are going to march towards the Sahitya Academy, and they want the Academy to take a stronger stand. And most importantly, they say it is also about the generic influence and atmosphere about incidents in Dadri, in Ballabgarh, and they say that at this juncture Right. that there needs to be better system in place.